जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा ज़िले के नौगाम सेक्टर में फ़ौज ने LOC पर दरांदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया है। सुबह सवेरे पाकिस्तानी पोस्ट की जानिब से मुश्तबा नकलो हरकत देखने के बाद फोर्सेस ने कार्रवाई की और खारदार तारों को काटकर दरांदाजी की कोशिश कर रहे 2 मिलिटेंटों को हलाक कर दिया। भारी असलहे से लैस मिलिटेंट पाकिस्तानी पोस्ट की जानिब से आ रहे थे। इससे मुल्क में दहशतगर्दी को बढ़ावा देने में पाकिस्तानी रोल का पता चलता है। मिलिटेंटों के कब्जे से 2 AK-47 राइफल, 12 मैगजीन्स, 1 पिस्तौल, 4 ग्रेनेड, रेडियो सेट्स, खाने पीने की अशिया और तकरीबन 1.5 लाख रुपए हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी करेंसी बरामद की गई। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। Early hours of this morning, our troops along the line of control in Nagam sector detected suspicious movement originating from Pakistani posts in the area. Appropriate response by troops on ground was taken to eliminate the 2 terrorists who were trying to infiltrate into our area by cutting the anti-infiltration fence. The heavily armed terrorists, dressed in combat fatigues, had taken the route through Pakistani posts in the area opposite, which clearly indicates Pakistan complicity in abetment to fomenting terror in India. Action of own troops was precise and timely, thereby ensuring a clean operation. Recoveries from the slain terrorists, which we'll be sharing separately with you, includes 2 AK assault rifles with 12 filled magazines, a pistol, magazines, some grenades. In addition to the food and medicines, we also have recovered about 1.5 lakhs in Indian and Pakistani currency. The search operations are still underway in the area to sanitize. The infiltration attempt follows similar attempts made by Pakistan in Kupwara and Rajouri sectors in recent past and needs to be seen in the backdrop of various inputs about increased presence of terrorists in the launchpad across the line of control, fully facilitated and supported by Pakistan Army.